Namaskar, a very warm welcome to all of you. Joining you today, I'm Nupukul Shrestha and you're watching us live on eVidya channel number 12. And you may also stream this session live on our YouTube channel ncertofficial. Today in this session, we are going to discuss something really very important, and today we will discuss the chapter of class 12 biology, and the topic is sexual reproduction in flowering plants. And to discuss this topic in detail, I would like to invite Pooja Vora ma'am, PGT Biology, St. Teresa School, Indrapuram, Ghaziabad. Welcome to the session, ma'am. Namaskar. Namaste. And dear viewers, if you have any query related to this topic, feel free to call us on this number 8800440559, and you may also mail your queries to dth.class12@cit.nic.in. So let's start our session, and what we are going to explore today, ma'am, in this session. Very good afternoon. Today's topic is sexual reproduction in flowering plants, and this is grade 12 first chapter of the unit 1. This chapter is very important because so many MCQs and very important questions are from this chapter only. Yes. So it should be very beneficial for the students. So let's start the topic. And yes, ma'am, and we also have covered some of the topics of this chapter in our previous sessions. Yes, right? right. Half of the chapter has been covered in our previous session, and today is the second half part of this chapter. Okay. So let's start, ma'am. Sure. So the topic is, the chapter name is the sexual reproduction in the flowering plants, and today's main topics which are going to be covered here are the male gametophyte, female gametophyte, pollen-pistil interaction, and Yes. artificial hybridization. So these are the major topics which I am going to tell you in detail. Okay. So the first slide says about the male gametophyte. Male gametophyte means we are going to describe, or we are going to discuss about the pollen grains. So the main question is, what are the pollen grains and what is their size and what is their composition. So pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. If I say micrometer, it means it's very small, because micrometer is 10 to the power of minus 6 times lesser than a meter. So they are very small, and the diameter means their total width is approximately this much. And these pollen grains, they have the two layered wall, and collectively these two layers are known as the sporoderm. And this sporoderm, they have the outer layer known as the exine, which is very hard layer, and it is made up of a very special organic molecule, organic substance, which is known as sporopollenin. In this diagram, which is in this slide, you can see also there is the outer covering, that is exine, and there is an inner layer, that is intine, and inside the intine we can see the two different headings, the vegetative nucleus and generative nucleus. These two headings we will discuss in coming section of this session. So let's move on. Exine, which is the most resistant organic material. As I said earlier, this is the most hard layer, and it can withstand high temperature and the strong acids and alkalis. Means कोई भी enzyme या कोई भी strong acid या strong alkali means base, इसको dissolve करने में capable नहीं है. This is very resistant layer, and as the slide says, no known enzyme can degrade it. So the pollens are well preserved as fossil. Here, ma'am, I would like to add one more very important thing. When the line says pollen are well preserved as fossils, which says कि ये स्पोरोपोलिनिन की जो आउटर लेयर है वो फॉसिल्स की मतलब मीन्स पॉलेंस को बहुत हार्ड और रेसिस्टेंट कवरिंग प्रोवाइड कर रही है. हम पॉलेंस को एज अ फॉसिल्स प्रिजर्व कर सकते हैं. अगर हम उनको -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर लें तो हम इनको मतलब बहुत सालों तक अपने पास किसी भी पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. और ये जो टेक्निक होती है इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं. तो जो लास्ट सेंटेंस है कि pollen are well preserved as fossil, it's very true. और this line can also come in the examination to justify the statement as well. So this line is very important. Okay. Next slide says male gametophyte का डिटेल में स्ट्रक्चर मीन्स pollen grains, what are the actual the sporopollenin and what are the germ pores.
So pollen grains have the prominent distal aperture for the germination called germ pore, where sporopollenin is absent. Actually what happened, जब हम pollen grain को देखते हैं तो pollen grain मुझे पूरी complete layer के form पे उसके बाहर sporopollenin नहीं नज़र आता. मीन्स एक्साइन में कहीं कहीं पर कुछ कुछ गैप होता है जहाँ पे sporopollenin absent होता है. वो जो गैप्स रह जाते हैं उन गैप्स को हम germ pores कहते हैं. And the inner layer, which is the intine layer, which is very thin and chiefly composed of the two basic components cellulose and pectin. तो inner layer तो हो गई cellulose और pectin की, और जो outer layer हो गई pollen grain की वो बन गई sporopollenin की. तो sporopollenin एक hard resistant covering जो कि pollen grain को एक protection provide करता है, so that they can preserved as fossils as well. So each mature pollen grain means when they become fully developed in angiosperm plants, then the pollen grain has two cells. First is a generative cell and second is a vegetative cell. तो अभी हमें ये समझना है कि where is the generative cell, where is vegetative cell, what are their differences, what are their functions. So vegetative cell is basically larger. It has abundant reserve food material and a large nucleus which is irregular in shape. So students, please be very careful to write whenever you are writing the answer. So write about the basic difference, that is the vegetative cell is larger while on the other hand generative cell is smaller. Vegetative has the reserve food material into it while the generative cell has very less, or we can say no reserve food material into it. Vegetative cell has a large nucleus which is irregular in shape while the generative cell itself is spindle shaped, right? So these are the differences and we can see these differences with the help of a diagram as well. You can see in this diagram where is the vegetative and where is the generative cell. So let's start from the A heading. From the bottom we can see that the pollen grain has an exine layer, it has an intine layer, it has a germ pore. Germ pore is where the sporopollenin is absent. Inside it there is a nucleus and cytoplasm. Above it, the above diagram, we can see there is a tube nucleus and generative cell. So it is very clear from this diagram that generative cell is very small. It is spindle shaped while the rest of the part of the pollen grain is covered with the vegetative cell which is bigger, right? So this is the difference between these two. So let's move back where we were. So vegetative cell is larger, generative is smaller. Right. And next we have the male gametophyte. We are continuing, and the topic is the viability of the pollen. Viability of the pollen says that means when the pollen falls on the stigma of a flower, so till time when it reaches to the ovary and passing through the style, so it's its viable period. वो कितनी देर तक सर्वाइव कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलन फॉल हुआ है स्टिग्मा पे और इमीडिएटली वो डाई हो गया. सो उसका जो वाइबिलिटी पीरियड होता है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. As the slide says, in the case of the wheat rice, the viability period is approximately 30 minutes, and in the members of the family Solanaceae, Rosaceae and Leguminosae, the viability period is in the months as well. तो हम उनको बहुत लंबे टाइम तक उनको हम रख सकते हैं, और ये जो इनका मैम वाइबल पीरियड टाइम होता है इसकी वजह से ही हम इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम उसको प्रिजर्व कर लें. और जैसे मैम हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ ग्रेन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स? हमें कैसे पता चलेगा? मीन्स पॉलेंस कितने हमें चाहिए होंगे किसी सीड के फॉर्मेशन के लिए जी. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल मैम. सो इफ़ अ प्लांट, फॉर एग्जांपल टोमेटो प्लांट, तो टोमेटो प्लांट में अगर मेरे पास 250 सीड्स हैं, तो इन 250 सीड्स के फॉर्मेशन के लिए कितने पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड होंगे, ये कैसे पता लगाते हैं? पॉलन ग्रेन्स तो मैम बहुत सारे फॉलो रहे स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन उनमें से जो सीड का जो नंबर है वो सीड कहाँ से बना होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना होगा. तो वो जो सीड बना है फर्टिलाइजेशन के बाद वो पॉलन ग्रेन और
मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर अभी हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके अंदर मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स होते हैं। तो उसका एक मेल गैमीट ओवरी के अंदर एग सेल होता है, उसे फ्यूज़ करता है, मीन्स यूनाइट करता है और एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो कि जाइगोट कहलाता है। ये जाइगोट आगे चलकर जो है एम्ब्रियो क्रिएट करता है। लेकिन जब हम सीड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो उस प्लांट में जब सीड बनेगा तो जितने सीड बन रहे हैं उतना ही मुझे पॉलन ग्रेन चाहिए। दैट मीन्स उस पॉलन ग्रेन का एक मेल गैमीट ही तो एग के साथ फ्यूज़ होकर हमें जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। सो वी कैन ईजिली फाइंड इट आउट कि भाई इतने सीड अगर मेरे बन रहे हैं किसी भी प्लांट पे तो उसके लिए एटलीस्ट इतना पॉलन मुझे उस इक्वल नंबर पे मुझे चाहिए होगा। जी, राइट। सो द नेक्स्ट स्लाइड। Male gametophyte. So once the pollen grains are shed, they have to land on the stigma before they lose viability. This is very important point, मैम, क्योंकि अगर viability उसकी ख़त्म हो गई तो स्टिग्मा पर फॉल होने के बाद उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। So before they lose the viability, they have to be land on the stigma and bring out the process of fertilization. Okay. This diagram which says about where is the generative nucleus, where is the vegetative cell, where is exine, where is intine, and two more structures are there in the last two diagrams where we can say that there is a long tube-like structure which is known as the pollen tube. So this pollen tube comes out from the inner layer of the pollen grain which is intine, and from where it comes out through the germ pore. So where is the germ pore? Germ pore is there where sporopollen was absent. सो वहाँ से एक जर्म पोर से एक पॉलन ट्यूब बाहर निकल रही है, एंड पॉलन ट्यूब इज कैरिंग द मेल गैमेट इनटू इट, मेल सेल्स इनटू इट. So this was all about the male gametophyte. Our next topic is going to cover about the female gametophyte, that is embryo sac. In general is monosporic. For example, a plant that is Polygonum. Monosporic means in this type of the development, only one megaspore which is situated towards the chilazal end, it remains functional. That means total कितने megaspores बनते होंगे जिसमें से एक functional है, तो total बनते हैं 4. उन 4 में से एक जो chilazal end की तरफ होता है वो functional होगा, while the remaining 3 megaspores gradually degenerate and finally disappear. तो एक megaspore functional है जिससे डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो सैक का, तो हम उसको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इज देयरफॉर इट इज मोनोस्पोरिक. मोनो मीन्स 1, तो एक मेगास्पोर से बना है ये. सो फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. अब फीमेल गैमेटोफाइट व्हेन इट गोइंग टू बी डेवलप, व्हाट आर द चेंजेस एंड व्हाट आर द स्टेजेस देयर वुड बी. So the point A is the functional haploid megaspore is the first cell of female gametophyte of angiosperm. In any angiospermic plant, as the previous slide says, only one megaspore remains functional, and this functional megaspore is haploid. Haploid means it has the n number of the chromosomes, right? That means half the number of the chromosome. It is haploid. So this haploid megaspore is the first cell. Point B says this single haploid megaspore cell start enlarging its size and form the female gametophyte, which is in the later stages known as embryo sac. Now actually what happened inside that particular one megaspore, वो जो एक megaspore हमारा functional हुआ था, उस एक megaspore के अंदर क्या होता, process क्या होता है actually उसके अंदर. So its nucleus undergoes mitotic division to form 2 nuclei. Mitotic division says when the number of the chromosomes remains the same. एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर्स सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन में जाता है तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बन गए, एंड दीज 2 न्यूक्लियाई मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. कुछ ऐसा समझें कि हमारे पास एक ऐसा बड़ा सा सर्कल है और उस सर्कल पे जब ये 2 न्यूक्लियस बने तो एक न्यूक्लियस एक पोल पर ऊपर गया और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल पर नीचे आया उस इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर पे, जिसको हमने अभी आगे एम्ब्रियो सैक समझना है.
तो हमारे पास अब जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ वो सिंगल सेल नहीं है, सिंगल न्यूक्लिएट मीन्स सिंगल न्यूक्लिएट नहीं है, इट इज़ नाउ 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एक न्यूक्लियस ऊपर चला गया है और एक न्यूक्लियस नीचे आ गया है। और ये 2 आए कहाँ से थे? एक सिंगल न्यूक्लियस था जो माइटोटिक डिवीजन से 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ था, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म कर चुका था। नेक्स्ट स्टेप, पॉइंट डी, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक undergo 2 more sequential mitotic division, means अब इसमें 2 बार और माइटोटिक डिवीजन होगा। अभी हमारे पास कितने न्यूक्लियस थे? 2 अपोजिट पोल्स पर। अब इनमें फिर से माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो जब फर्स्ट वाला डिवीजन हुआ था तो 2 बने, सेकेंड टाइम फिर माइटोटिक होगा तो 4 न्यूक्लिएट स्टेज आएगी, एंड व्हेन द थर्ड डिवीजन हैपन देन इट फॉर्म द 8 न्यूक्लिएट स्टेज। सो अब विजुलाइज करते हैं हम वो सिचुएशन कि मेरे पास ये एक एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई है, मीन्स ये जो एम्ब्रियो सैक क्रिएट हुआ है इट इज़ 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, मीन्स विद 8 न्यूक्लियस। दिस स्टेज comprises of a micropylar end and a chalazal end with the 4 nuclei at each end. Students, this point is very important and point to be noted here that ये जो हमारा स्टेज आया है 8 न्यूक्लिएटेड वाला, इसमें से हमारे जो 4 न्यूक्लियस हैं वो एक पोल पर गए हैं और 4 हमारे दूसरे पोल पर गए हैं, तो ईच एंड पर हमारे पास 4 और 4 न्यूक्लियस अपीयर होते हैं। बट क्या ये ऐसे ही रहेंगे और सम चेंजेस वुड बी देयर? सो let's see the diagram first. In this diagram there is a development of female gametophyte. As the previous slide says, 4 nucleus goes at the one pole, that is the chalazal end, and the 4 nucleus goes towards the next opposite pole, that is the micropylar end. But in this diagram we can see there are the 3 cells at the top and the 3 cells at the bottom. So how this difference happen? So 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and get organized into cell. Now 3 cells present towards the micropylar end grouped together, they constitute the egg apparatus, that is 2 synergids and 1 egg cell, and 3 cells at the chalazar end, they form the antipodal cells. Total there were 8, 3 moves towards the antipodal, 3 वहाँ पे हमारे एंटीपोडल बन गए, और 3 cells they come towards the micropylar end and forms an egg apparatus, जिसमें 2 synergids हैं और एक egg cell है। So 8 में से 6 तो कंप्लीट हो गए, 2 कहाँ हैं? These 2 cells, ये जो हमारे 2 न्यूक्लियस बचे हैं, they move towards the center part and form the polar nuclei. See the diagram, there it is written bipolar nuclei. तो 2 न्यूक्लियस हमारे सेंटर पर हैं, they don't fuse, they never fuse with each other. न्यूक्लियस फ्यूज नहीं है, तो काउंटिंग न्यूक्लियस की we can, if we count the number of the nucleus in the slides, we can get the 8 nucleated stage. 3 at the top, 3 at the bottom and 2 in the middle, nucleus. But number of the cells are 3 at the top, antipodal, 3 at the bottom, 2 synergid, 1 egg, 6, and 2 at the and 1 at the center with the 2 nuclei. So total cells are 7 and total nucleus are 8. So this stage is 7 celled and 8 nucleated stage, and this is the complete embryo sac. This is the summary of that. That means 3 cells of the chalazal end are called antipodals. See, chalazal end पे 3 antipodal हैं ऊपर top पे, and large central cell is formed by the fusion of 2 polar nuclei. We can see in the previous slide as well now, 2 polar nuclei in the middle. So a typical angiospermic embryo sac or the female gametophyte at maturity consists of 8 nucleus and 7 celled structure. This question can come in exam, कि how can we find out there are the 8 nucleus and 7 cell structure in embryo sac? Explain. So students, you have to write this complete answer. So how the change happens, or what are the mitotic divisions, how many mitotic divisions takes place over there. Now the male gametophyte develop, female gametophyte develop. Now what is the pollen-pistil interaction? Pollen-pistil interaction heading says when the pollen interacts with the pistil,
Pistil, as in the previous session, we discussed that pistil has three main components. Upper part is the stigma, then after that is the style, and the lower basal swollen hollowed part is the ovary. This is the pistil. So when the pollen falls on the stigma, means on the pistil का पहला वाला part पे stigma पर जब वो fall होते हैं, then there is an interaction. What is the pollen pistil interaction? It means the event from the deposition of pollen on the stigma till the entry of pollen tube into the ovule are collectively called pollen pistil interaction. I can show you with the help of a diagram here, with the help of the flower here. See, this is the flower of the hibiscus, and this particular part, this whole central portion is the reproductive part. This portion is the, which is very in the form of a very thin filament and having the yellow spots on it. This is the stamen area. Yellow spots are the anther, and the fine thread-like structures are the filament. And this terminal part is the stigma. When the anther is getting filled with the pollen grain comes out and they fall on the stigma. So pollination happens. But what is pollen pistil interaction? So when the pollen falls on the stigma, there is a interaction between these two, stigma की wall and pollen grain. Why it happens? Why pollen pistil interaction is more important? Because it needs to find out whether the plant is of the same species or the correct viability pollen grain. So for this, the pollen pistil interaction is very, very important, and it is an essential step in fertilization of angiosperms and determines compatibility and incompatibility of pollen and pistil. इन दोनों के बीच में compatibility and incompatibility को determine करने के लिए this pollen pistil interaction is important. It is a dynamic process involving pollen recognition followed by inhibition or promotion of pollen. Inhibition or promotion means whether the stigma allows the pollen grain to form a pollen tube and enter into the style or not. So inhibition is if doesn't allow. Promotion of the pollen means when it allows the pollen to form pollen tube and travels it through the style. It includes the following steps. Step number 1. Recognition of compatible pollen means stigma recognize करेगा कि pollen जो fall हुआ है वो compatible है या नहीं. Second, growth of a pollen tube. If it is compatible, then pollen tube बनना शुरू होगा and it forms and from the intine and comes out through the germ pore and travels into the style. Third point, entry of the pollen tube into the ovule. When pollen tube travels into the style, it reaches till ovule, into the ovule, and then further process happens. So the first point, let's see it in detail. The pistil has the ability to recognize and accept the right, means compatible pollen of the same species and to reject the pollen grains that are incompatible either of the same species or of other species. मीन्स पॉलिन्स जो फॉल होते हैं स्टिग्मा पे उनको वो कितना कंपैटिबल है स्टिग्मा के ऊपर वो फाइंड आउट करना, दैट प्रोसेस इज रिकॉग्निशन if it is compatible or not. After recognition of the correct pollen, pistil promotes post-pollination event that leads to fertilization. So fertilization के लिए pollination correct होना is very necessary.
So the recognition of the correct pollen is very much required. The pollen grains reach the receptive stigma of the carpel by the act of pollination. Pollen grains, after getting attached to the stigma, absorb water and swell. So when the pollen grain fall on the stigma, so what actually happen after that? After falling on the stigma, they absorb the water which is present on the tip of the stigma and then start swelling. They start increasing their size. Swell हो जाएंगे, अपना size increase करेंगे और compatible pollination के बाद pollen grains they starts germinating on stigma. When they start germinating on stigma, they start forming the pollen tube. And pollen tube, एक क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे पूछते हैं जी कि मैम बहुत सारे pollen grains फॉल होते हैं तो क्या सारे pollen grains pollen tubes बना के स्टाइल से एंटर करेंगे? So the answer is no. So many pollen grains falls on the stigma, but only one pollen grain उसका pollen tube enter करेगा. So when one pollen tube forms, then rest of the pollen grains का pollen tube बनना बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक केमिकल इंटरेक्शन है जिसकी वजह से फिर वो pollen tube नहीं बनता. तो एक pollen grain ही उसकी pollen tube ही एंटर करती है. और साथ ही एक और सवाल है मैम कि हाउ डज द pollen tube grow through the style? ये भी इसी का पार्ट है मैम? Yes, and this is very important question as well, ma'am. कि pollen tube style से travel कैसे करती है? Because see, if I show you in this diagram, in this flower, you can see that this is the style part flower पे. यहाँ पर ये हमारा एक style का part है, ये जो लंबा वाला है, इसके अंदर style है actually, लंबे वाले part पे. ठीक है, इसके अंदर style होगा. अब यहाँ पर स्टिग्मा है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन फॉल हो चुका है. पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब बनेगा और वो इस टाइल से ट्रैवल होकर अंदर आएगा. तो वो आएगा कैसे? तो पॉलन ग्रेन्स कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं. वो एंजाइम इन टाइल की वॉल को डिसॉल्व करते हैं, उसके टिश्यूज को तोड़ते हैं, एक स्पेस बनाते जाते हैं और उससे वो ट्रैवल करते जाते हैं. ट्रैवल करने के बाद कहाँ जाएंगे? यहाँ फ्लावर के अंदर, यहाँ पर इसके एक सेंट्रलाइज पार्ट पर, इस जगह पर यहाँ पे इसकी ओवरी है, वहाँ तक पॉलन ट्यूब को जाना है. उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट आ रहे हैं मैम, और वो 2 मेल गैमीट इसकी ओवरी तक यहाँ तक पहुँचेंगे और वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा. तो अगर हमारा यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कंपैटिबल पॉलन से होगा, देन एंड ओनली द पॉलन ट्यूब फॉर्म्स, एंड देन पॉलन ट्यूब फॉर्म्स, इट ट्रैवल्स एंड देन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हियर at the basal part. Okay. So the growth of the pollen tube, as the slide says here, it says the pollen grain reach the receptive stigma of the carpel by the act of pollination. Pollen grain, after getting attached to stigma, they absorb water and swell. And after the compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. Now, the pollen tube grows through the tissues of stigma and style by secreting the enzymes that digest them. This line is very important because we should know कि pollen tube जब grow कर रही है तो several enzymes help it to pass it through the stigma and style by digesting the tissues of the stigma and the style. तो जगह बनती जाएगी और pollen tube आराम से travel होगा. In some plants, generative cell प्रीवियस स्लाइड्स में हमने जेनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स के बारे में पढ़ा था. सो इन सम प्लांट्स जेनरेटिव सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा. इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन 3 सेल स्टेज, पॉलन कैरी द 2 मेल गैमीट्स फ्रॉम द बिगनिंग. तो जिनमें हमारे पास शुरू से ही 3 सेल कंडीशन चलता है, उनके पास 2 मेल गैमीट्स पॉलन ट्यूब में स्टार्टिंग से रहेगा, एंड दैट 2 पॉलन male gametes travel into the pollen tube and reaches to ovary. Growth of pollen tube. अब ये pollen tube enter कैसे करेगा? ओवरी तक तो पहुंच गया, अब उसके बाद वो enter कैसे करेगा? ओव्यूल के पास. So after reaching the ovary, the pollen tube can enter the ovule either through the micropylar end, जिसको हम पोरोगैमी कहते हैं, और through chalazal end, chalazogamy,
or through funicle or integument, that is mesogamy. Because कोई ऐसा entry point तो होगा through which the pollen tube enters into. So if it enters through the micropylar end, then it is porogamy. If it enters through chalazial end, then this is chalazogamy. Or if it through the funicle or integuments, then it is mesogamy. Right. Now the very interesting topic, that is artificial hybridization. Hybridization means, ma'am, when we form the special type of a breed, special type of a species by mixing the two important characters of the two different characters का हम mixing करके एक desired character निकालते हैं. So this is artificial जो हम करते हैं, मतलब नर्सरीज में हम better qualities के लिए करते हैं. So it is the crossing of the different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. Target है हम better varieties बनाएं, superior quality की varieties बनाएं, इसलिए हम artificial hybridization कराते हैं. And it has been used by the plant breeders for crop improvement. आजकल मैम artificial hybridization बहुत ज़्यादा है क्योंकि commercially हमें better varieties चाहिए, superior varieties चाहिए, means quality and quantity दोनों पे work करना है. तो plant breeders they use this technique for the crop improvement. तो मैम जैसे कि एक नेचुरल प्रोसेस है और जैसे हम आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों में ही सेम टाइम लगता है. अगर हम बात करें क्वालिटी तो जैसे आप कह रहे हैं कि एक अच्छी क्वालिटी हमें मिल रही है. Yes. तो इट टेक्स द सेम टाइम एंड द प्रोसेस इज सेम. यस मैम एक्चुअली ये आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन की जो ये टेक्निक लगा रहे हैं. तो ये हम कैसे करते हैं, इसमें कितने स्टेप्स आते हैं और इसको क्या लेबोरेटरी में किया जा सकता है या फार्मर्स इसको सिर्फ अपने फील्ड पे ही कर सकते हैं, और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें हमें ये टेक्निक लगानी चाहिए, क्या हर तरह के फ्लावर्स में हम ये टेक्निक लगाते हैं. तो लेट्स सी, जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक पढ़ते हैं तो इट इज़ अचीव्ड बाय द फॉलोइंग methods, where the first method is saying emasculation. Okay. Emasculation, ma'am, if we break this word, we see that emasculation. Masculation word itself shows this is the masculine gender, male character. Yes. And when we remove this part in a flower, which is anther, because anther is the male part. So anther is removed from the bud before it dehisces using a pair of a forceps. अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ फॉर्सेप है या सिजर्स हैं, बेटर इज़ टू यूज़ फॉर्सेप्स. तो हम उससे इन द बडिंग स्टेज ऑफ अ फ्लावर उसमें एंथर रिमूव करें. फाइन. पॉइंट टू बी noted here, and this is a very important line which is shown as a red line in the slide as well. It is mainly done when the female parent bears bisexual flowers. क्या मैम इस प्रोसेस को हम करके दिखा सकते हैं? Sure ma'am, definitely. So bisexual flowers, as we have the hibiscus, this is a bisexual flower. Why bisexual flower? It has this male reproductive part and the female reproductive part both. Okay. But यहाँ पर ये फ्लावर पूरा ब्लूम फ्लावर है, पूरा खिल गया है अच्छे से. जी. हमें emasculation कब करना है? When the flower is in the budding stage. क्योंकि एक बार ये ओपन हो गया तो emasculation करने के मैम कोई फ़ायदे नहीं है. क्यों? Because now the anther is open to the surrounding. You can see. मैंने इसको क्लोज भी कर दिया फ्लावर को. Anther is open. Right. Pollen grains can come out easily. They fall on the stigma of the same plant. They fall on the stigma of the another plant's flowers as well. So जब मुझे emasculation करना होगा तो मैं budding stage में करूँगी and the removal of the anther वाला concept दिमाग में रखेंगे. How it happens? For this, I have this bud. This is hibiscus flowers bud. बट ये बड अभी पूरा फ्लावर बडिंग स्टेज पर है, पूरा कंप्लीट बड. इसकी 2 स्टेजेस वी कैन से. यहाँ पर अभी लास्ट सेशन में हमने सेपल्स के बारे में भी पढ़ा था.
तो यहाँ पे सेपल्स अभी थोड़े थोड़े कवर कर चुका है ये, और पेटल्स निकल रहे हैं, राइट। लेकिन अभी हम इसमें देखें तो पेटल्स इमर्ज हो गए हैं और आगे तक, देखो जी। इनसाइड इट समवेयर एंथर. So what to do? How the emasculation done? I'm just expanding the petals, having and I can easily see the anther inside it. I guess all my students also can see the anthers, which are of the yellow color. Yes. So it is better, students, to use the forceps for the process of emasculation, but scissors if I have. So I simply cut. See, you can see on the sheet of a paper there are the yellow structures. These are the anthers which I cut. So it's better to use forceps here, because forceps can go very deeply inside the flower and we can easily remove the anthers. Please be very careful, students, while doing this process in the laboratory. Please make sure that stigma won't get harmed, because stigma is at the center and somewhere here, so it should not get any harm. उसको कहीं चोट नहीं लगनी चाहिए, because हमारा टारगेट सिर्फ emasculation करना है और हम यहाँ से सारे anthers remove करते हैं. When it done, then what to do next? For this, the next step is bagging. Bagging is usually done by a simple using a poly bag or a butter paper. Preferably butter paper is much more better, but poly bag is also applicable. This poly bag, what I have done, इसमें मैंने बहुत छोटे छोटे जगह जगह पर छेद करे हैं. So for what purpose? ये जो छेद करे हैं इसका क्या टारगेट है, क्यों कर सकते हैं, क्यों करे होंगे? The reason is so that the plant, this bud, gets air. It breathes ना, it needs oxygen. So इसको मैंने इसके अंदर डाला और यहीं पर इसको मैंने ऐसे टाई कर दिया. थ्रेड कट लिया एक पीस and then tie it from here. This is bagging. This process is bagging, right? So ये बैग हो जाएगा. अभी अच्छे से इसको बैग कर लेंगे और अच्छे से इसमें धागा बना देंगे, टेप लगा लेंगे, so that कहीं से भी ये ओपन ना हो. क्यों बैगिंग करा? So that no another pollen grain can fall into it on the stigma. इसके स्टिग्मा पर कोई दूसरा पॉलन ग्रेन फॉल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बैग कर दिया. बैग इसलिए भी किया है बिकॉज नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट पे हमें क्या करेंगे, हम इस पे वी पुट द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा. ओके, बिकॉज वी आर डूइंग हाइब्रिडाइजेशन, वी वांट टू गेट बेटर क्वालिटी ऑफ द प्लांट. सो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, स्टिग्मा क्यों इसको बैगिंग करने का रीज़न ही यही था कि इसके स्टिग्मा पर पॉलिनेशन के थ्रू कोई अनवांटेड अनडिजायर्ड पॉलन ना फॉल हो जाए. सो व्हेन इट हैज़ बीन डन, आफ्टर सम टाइम व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिकल, व्हेन स्टिग्मा विल बी रेडी फॉर रिसीविंग द पॉलन, देन वी विल रिमूव दिस बैग वाला प्रोसेस. वी रिमूव दिस बैग. सपोज this flowers has the better quality, for example. So right. What we do, इसका एंथर इस फ्लावर जिसमें emasculation हमने किया था के स्टिग्मा पर ब्रश कर देना है, so that pollens from this flower's anther come in contact with the stigma of this flower. Clear? Okay. So what is the target of doing this activity? So that the desired pollen grain can attach on the stigma of this flower. Now close it and rebag it. Why rebagging? Yes. To again avoid the unwanted pollen, because there is a very chance कि unwanted pollen फिर से इसके ऊपर कोई दूसरा भी गिर जाए. So let it develop for some time, because it has the holes, it gets air.
तो ये डेवलप हो जाएगा आराम से. When we're done with this activity, so we target. Actually, this artificial hybridization is having 3 steps: emasculation, bagging and tagging. Okay. So emasculation we did, where we can see that we had removed the anther. Bagging we had done. Yes. Second time when I bag it, this is the re-bagging. Okay. And I tag it, means I need to write the name of the flower. Okay. Need to write the name of that particular species. It should be of the same species. Genera can change. That means किसका हमने यहाँ पे pollen dust किया है इसके ऊपर, right? And when it happened, so tagging, and then after some time we can see the flower which blooms. It will have the character of this one. So this is very important process. This is artificial hybridization. Right. Ma'am, one more important point. जी. That means whenever we do this process, we mainly do this process when the flower is bisexual. Bisexual means when it has both the reproductive organs in a same flower. और मैम ये कैसे आइडेंटिफाई होता है? Because we can easily find it out, मैम. अगर हम इसको आराम से देखेंगे, we can see that anthers हैं बहुत सारे, यहाँ पे स्टिग्मा है. तो एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हैं. तो इसमें हमें फ़ायदा है करने का. अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर ले लेंगे, तो अगर फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल है तो उसमें तो इधर एंथर है और पिस्टिल है. तो उसको इमैस्कुलेट करके क्या करेंगे, तो हमारा फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे. सो इमैस्कुलेशन स्लाइड सेज the anther is removed from the bud before it dehisces using a pair of forceps. Students, when I showed you an activity, I used scissors, but it is much better when we should use the forceps. It is mainly done when the female parent bears bisexual flowers. I hope now you are clear with the statement that why bisexual flowers used. हम यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यूज़ क्यों नहीं करते? आई होप एवरीबडी इज़ हैविंग द आंसर नाउ. नाउ द सेकेंड स्टेप, मैंने कि वहाँ पे बैगिंग करा था. सो व्हाट इज़ बैगिंग? द emasculated flower is covered by a bag of suitable size, generally made up of a butter paper, so as to prevent contamination of the stigma by unwanted pollen grains. कि जो हमारा स्टिग्मा, उसके ऊपर कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन तो नहीं फॉल हो जाएगा. सो दैट वी नीड टू बैग इट. व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर becomes receptive, the collected pollen grains are dusted onto the stigma, flower is rebagged and the fruits are allowed to develop. We can develop the flowers, we can develop the fruits as well. So double time bagging हुई थी. Once emasculation के बाद bagging हुआ, then dusting हुई desired pollen grain की, then rebag हुआ और यहीं पर टैगिंग हो गई. राइट. सो अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? रीबैग होने के बाद जो भी हमारा फ्लावर है, जब वो फ्रूट बनाएगा तो फ्रूट भी डिजायर्ड होगा, और फ्लावर तो हमारा डिजायर्ड था ही, तो डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ था. सो दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज यूजिंग बाय द फार्मर्स नाउ डेज वेरी मच. राइट. So this is all about the today's lecture, that is sexual reproduction in the flowering plants, and the students, you all have learnt about, as if I go back to my slides, all the 4 points you have learnt here. So here we discussed about seeds and grains as well. So can you explain this more with the help of example, the difference between seeds and grains, and can you explain it? Yes ma'am. Most of the time the students are getting confused, and they usually say seeds and grains are the same thing. But no, seeds and grains are entirely different. What is the basic difference? So ma'am, as I said, let's do the dissection of the flower. I am just removing the sepal. Then I am removing the petal one by one.
So whatever is in my hand now, this one, this is the reproductive part. This is the style. Inside it there is style, stigma, and here somewhere is the ovary. These are yellow part are the anthers and the filament. So if I use a forceps and then just open it, I can easily find that there is a basal swollen area which is ovary. Inside the ovary there is ovule. So when fertilization done after the pollination, then that particular ovule which gets fertilized, it forms the seed. Okay. Means ovule forms the seed. And this, what about the ovary? Ovary forms the fruit. तो seed और grain में क्या फर्क हुआ फिर? Seeds are ripened ovule, while grains are ripened ovary. These are the little edible fruits grains are. For example, if I say rice, if I ask a question to the students, the rice is grain or seed? So the answer is rice is a grain. What is wheat? Grain or seed? What is mango seed? What is apple seed? I also already said seed. Seeds. That means they are developed from the ovule. So the part which develops from the ovule, it is seed part, and the part which is the ripened ovary, we can say, or the fruit part, that is grain. So there are so many examples through which we can explain. Okay. So this is the basic difference, ma'am. और मैम जैसे ऑरेंज होता है, ऑरेंज का जो सीड है उसे भी जैसे हम अगर उसके पील करें, पील ऑफ, तो उसमें भी कुछ ना कुछ निकलता है, कुछ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मैम, वो क्या होते हैं? Yes, ma'am. And this observation was done by this practical, or this activity was done by so many students, and they observed this as well. And most of the time when they squeeze the orange seed or lemon seed, they find that कि जब इसको हमने squeeze करा या इसको open किया, तो there are the little layers, tiny structures into it. So they said, ma'am, this is the seed, and inside the seed there are the so many structures. So what are these? So सीड के अंदर जब हम उसकी लेयर्स हटाते हैं एंड उसको जरा सा भी स्क्वीज आप करोगे तो यू कैन सी द टाइनी लिटिल स्ट्रक्चर्स इनटू इट. दीज आर द एम्ब्रियोज. ओके. These are the tiny embryos, and if you squeeze the seed and just put these embryos into the soil and give the optimum conditions, you can easily find that they can germinate. They can grow into a new plant because they all are the embryos. And this condition, when so many embryos are present inside the seed, this is the polyembryony. As a term says, poly means many, and embryony means embryo. So many embryos are present in a seed. This is polyembryonic condition. And again we have a much more information about the polyembryony, apomixis and so on. So we will cover them in the coming sections. ओके. और मैम जैसे कि हमने शुरुआत की इस चैप्टर की, तो आपने बताया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और 12th क्लास का ये चैप्टर है, बोर्ड है, और इसमें से काफ़ी आपने कुछ पॉइंट्स जब आप पढ़ा रहे थे तो ये आपने उसको डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप ज़रूर ध्यान रख लें ताकि ये पूछा जाता है, और ये कवर करता है कुछ मार्क्स भी ये चैप्टर जो है कवर करता है. yes. तो क्या वो हम जो पॉइंट्स आपने बताए थे उसको हम एक बार रिकॉल कर सकते हैं? Definitely, ma'am. So these were the topics which we studied today: male gametophyte, female gametophyte, pollen-pistil interaction and artificial hybridization. So students, if the question can come on the pollen-pistil interaction, so you need to describe the detail, this one, pollen-pistil interaction. You need to describe about the very important point, incompatibility of the pollen and pistil. This is the essential step in the angiosperm plants. And after that, it can come in a 2-mark question or can come in the 3-mark question. This is a very important part, and you have to write all these 3 points as well. Right. That how it gets recognized, how the growth of the pollen tube happens, how the entry of the pollen tube into the ovule, what is the role of the enzymes, how they find out whether the pollen grain is compatible or not. So this question, and as we discussed about the hybridization, this one, artificial hybridization, because ma'am, this part is also in the practical area.
Okay. In class 12th, emasculation, bagging and tagging, this is the practical part as well. And students get it prepared thoroughly, because this is very important for the viva purpose as well. What is emasculation, what is bagging, why we used to do, and why the only bisexual flowers always chosen, then what is the use of the rebagging, why we tag them. तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड ऑफ कोर्स मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट वाले क्वेश्चंस पे एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, द क्वेश्चन कैन कम जस्ट लाइक दिस कि हाउ कैन वी से दैट. एक स्लाइड में आपको दिखाती हूँ जहाँ पे हमने इसकी बात करी थी कि दिस इज 7-celled and 8-nucleated stage. So justify the statement how the embryo sac is 7-celled and 8-nucleated. So thoroughly you need to find out the divisions, mitotic or meiotic. Okay. So this is all about today's session, and thank you so much, ma'am, for joining us today and explaining this chapter in such a good way and in such a wonderful way. Thank you so much, ma'am. So this is all about today's session, or I hope you find this session really helpful, and now it's time to wrap up this session. So I'm Reproduction signing off. You take care. Namaskar.